Good morning, dear students. Now we are going to read or study about the different types of chemical reactions. First, we know that chemical reaction means the breaking of old bonds and making of the new bonds. So no need to worry about what are the bonds because we are going to study it in next chapters. So first type of chemical reaction is combination reaction. The word combination here it implies that something is going to combine. So if two or more reactants will combine with each other to give some single product, one product, then this chemical reaction will be called as combination reaction. For example, here carbon plus oxygen gives carbon dioxide. It carbon oxygen sagar misiki carbon dioxide duchi. Next, formation of water, that is hydrogen gas plus oxygen gas gives water, which is a liquid. Next example is an important one, that is take some quick line जोड़ा को आम चूर्ण पत्थर कहूँ चूर्ण कहूँ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस विच इज इन सॉलिड फॉर्म प्लस वाटर लिक्विड चूर्ण को पानी में नहीं मिसेले इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH को आम हाइड्रोक्साइड बोल कहवा सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट द कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एज क्विक लाइन and calcium hydroxide is known as slacked lime. This type of reaction in which heat is evolved बा हीट बाहर जो रिएक्शन हो ताकू कहा जाए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक थर्मिक कम्स फ्रॉम द वर्ड थर्म बा हीट को इम्प्लाय करे. नेक्स्ट एक्सो मीन्स जोड़ा बाहर को बाहर. हियर नेक्स्ट इफ यू विल टेक द सेम स्लैग्ड लाइन एंड अलाउ इट टू रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड जिते आम घर व्हाइट वाशिंग करूँ घर जो चूर्ण लगाऊ धला करने व्हाइट कलर करने से आम क्विक लाइन को नौ वाटर मिसे स्लैग्ड लाइन करी आम ताको लगे दू. बट ये स्लैग लाइन जोटा कि घरे लगी थाए सी जो बाहर आटमोस्फियर कार्बन डाइऑक्साइड सागर गोटे बा दुई दिन भल भाव रिएक्शन करे तापर तार कलर आउ टी व्हाइट भल व्हाइट देखा जाए कौन पाई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 बा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O. So this type of reaction in which heat is evolved is known as exothermic reaction. Here I have also mentioned what is the difference between endothermic and exothermic. You have to know about two terms. Endo means in which heat is needed to carry on the reaction. Reaction करिया पई जदि आमे heat supply करूछंती reaction को then it is endothermic. Exothermic means this reaction in which heat is released in the reaction. Heat बाहरिबो. For example, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखा इवापोरेशन जदि वाटर को हीट दबा ताले से वाटर वेपर हो गोटे फिजिकल चेंज. नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिसला परे सनलाइट रो प्रेजेंस रे ही ग्लूकोज तैयारी पारिबो. नेक्स्ट मेल्टिंग ऑफ आइस आइस को हीट देले से हीट को एब्जॉर्ब करला परे जाई मेल्ट हुए. नेक्स्ट अनदर वन नेक्स्ट वीडियो भी ये जिनसा को डिस्कस करबा कैल्शियम कार्बोनेट. ये जो जिनसा कैल्शियम कार्बोनेट ताको जदि हम हीट दबा से बैक करबा हमको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 ये जिनस को आमको बैक कर जिनस को. नेक्स्ट एपटे देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले आमको किसी हीट दबा दरकार ना हीट इज रिलीज्ड इन द रिएक्शन. एग्जांपल इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विच गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट मीन्स दिस reaction. So this is all about the combination reaction. There are more number of examples in the book, so you will follow that. If any doubt you can ask me.